Hello everyone and all of you guys, welcome to the YouTube live stream once again. As you guys know that a fire started in Los Angeles and that bushfire nearly burned 32,000 canals. And that bushfire literally burned 32,000 acres of land there in America. And that is literally one of the biggest signs of climate change. That a fire started in Los Angeles has burned 32,000 acres of land. And it is estimated that America has spared $150 billion of deficit. $150 billion of deficit because of the fire that has been started in Los Angeles. And it's a high time to think about climate change. Climate change has been happening because of our inhumane activities around the world. And I think it's the time to think about bringing the change, doing positive inventions, doing positive initiatives to stop global warming and make this world a better place to live. Another news is that there is a Palisade Island. There's been a Palisade Island in uh, Los Angeles, and where whole of the Hollywood celebrities and the business tycoons used to live. That has been burned, and now they got no place to live. And more interesting facts to know about is that there has been a Hollywood actor known as Wood, and when there was a war in Gaza, he was saying that it's okay that Israel is burning Israel is burning the land of Gaza and attacking and demolishing the whole Gaza. And he was happy while speaking at the media channels. And now his house there in Palisade is also burned. And he was crying, sitting in front of the TV, that my house is burned and I can't do anything about it. I think these are few things uh, that a man should know before going further into the things like if few things a man should consider, that if you're seeing a man, his house is being burned, or is under the climate change problems, or is under the war and his house is being burned, and you're happy at it, then you should wait for your turn. And that's what happened with that American Hollywood actor, that when he was happy when Gaza was burning, and now when his house is burned, he was crying while sitting in front of media channels. Hey, this name is pretty much familiar to me. Hi, hello. It's got a comment. And all of you guys watching here, don't forget to like and subscribe to the channel. So when there was a war in Gaza, that Hollywood actor was pretty much enjoying. And when his house is burned, he was crying, sitting in front of the media channels. Of course, this is what we call it, a karma that you do. I'm talking about that Los Angeles fire. I'm talking about that Los Angeles fire in 32,000 acres of land. It's burned. So yeah, I'm talking about that. Now 32,000 acres of land is burned there, and
They need more renovation, more process to go through, more hard work, and more investment there to once again rebuild the whole Los Angeles. And believe me, that fire was unstoppable. Actually, half of Americans negotiated because there was snowfall on the other side and it was so cold that the fire couldn't move ahead. But actually, that was one of the huge bushfires in the world. Uh, there was no one controlling that. It was just because of snowfall that Americans survived at that. I mean, they've tried enough. They got all the facilities of the world, latest technology of the world, and they tried their best to stop that fire. There was no one stopping it. That actually give us kind of a reminder that there is a force that is running this whole universe. Like being able to control all the calamities and being the superpower of the world, and you can't stop a fire because you don't have enough power. Few things that they should know. And it's not about Americans. Canada has also helped in getting rid of that fire. Mexico is also taking its part. Greetings from Uganda, Africa. JJF Foundation. Hey, welcome JJF Foundations. Thanks for the comment. And Muskan, hi. Hello, Muskan. Nice to see you here. So where three countries are taking part in stopping the fire of Los Angeles, and it's not working. It's not stopping from coming ahead. I already told you that America survived because there was snowfall on the other side and the temperature was so low that it survived because of that. Otherwise, there was no chance that they're gonna take themselves away from that fire. And it's a high chance. Actually, one of the most important thing to consider is that Donald Trump has not become the president of America for the second time. And guess what is sad? Donald Trump said in his interview that if they're not gonna, if Hamas is not gonna leave the hostages of Israel, they're gonna burn the whole Middle East. So they're gonna burn the whole Middle East. Whole Middle East population is about nearly 1 billion people live in the Middle East. And if Donald J. Trump is planning to burn the whole Middle East, who's where are the humanitarians who's going to condemn these statements that an American president, just to support his ego, is planning to burn the whole Middle East? इतने दिन से कहा थे आप? I used to come live, Muskan. I used to come live daily, but you were missing, Muskan. You were missing. I used to come live daily. An American president, just to support his ego, is planning to burn the five countries of the Middle East. So planning to burn the Middle East. These and he didn't thought about that. He's planning to burn the whole region. And our president is planning to burn the whole region. Nobody's condemned it. And just look at the karma. The moment he gave the statement, very few days after, a fire erupts in Los Angeles. And it erupts so hot that 32,000 acres of land is burnt. And they can't do anything about it. They can't stop that. Actually, now they are facing the taste of their own medicine. One wrong decision that a parliamentarian, that a leader of the nation makes, and the innocent citizens have to suffer for that. This is what has happened in this case. मुस्कान मैं समझी नहीं.
Muskan, good to see you back. Welcome back to the stream. Uh, request all of you guys to like and subscribe the channel. So these are the few things a leader of the nation you should consider before giving bold statements about the things that what is gonna be the impact of the statement that it's making and where it is gonna go. जी मुस्कान मैं बोल रहा हूँ. So a statement from a leader where he said that he is gonna burn the whole Middle East. Where in his election campaign uh, before the American elections, Donald Trump was saying that America will try after he's gonna become the president. America will look to stop the war in the Middle East. And now as he has become the president of America, he's gonna become the official president soon. He started giving some really inhumane statements, and one of them is that he's gonna burn the whole Middle East. That he's gonna burn the whole Middle East. जी जी मुस्कान, बहुत शुक्रिया स्ट्रीम में आने के लिए. सुनाए आपका क्या क्वेश्चन है? कैसे हैं आप? सब ठीक है? So, being a leader of the nation, priorities changes. Leader tends to build more relations with the people instead of trying to be that same old Nazis mindset. He looks to spread peace in the world. He always looks to make the world a better place. मुस्कान कहाँ से हो आप? नाइस, आप अच्छे हैं, सुन के अच्छा लगा. मैं भी ठीक हूँ. So being the leader of the nation and being the leader of the nation, giving such an inhumane statement and saying that it's gonna overtake the Middle East and it's gonna suppress the whole world. Maharashtra se hum. Okay. Good. Good to see you, Muskan. Maharashtra. I'm from Lahore. And after 32,000 acres of land is burned in America, who's gonna be responsible for that? The climate change directory. Yeah. So I'm gonna keep quiet. जी बिल्कुल असर की हो रही है.
So yeah, I was a little off for a moment because I got to work. Yeah, once again back. And I hope you all guys have been doing great. Hope you guys have been doing great. Now, once again, let's go through the deep discussion. The progress of a nation, progress of a nation actually depicts that how much is gonna be respected. Like, if a man dies in Africa, nobody cares about it. But if at the same time a man is shot in America, the whole media erupts and starts making the bold statements that this man has been demised, or has been pushed down, or has been murdered. At the same time, a problem which has been happened in Africa, nobody gave it attention. Because if you're not progress enough, if your nation is not powerful, if you don't have what people see and respect, you're not gonna be respected. At the same time, in America, what they say that all lives matter, but actually they didn't mention that all lives matter only in America. And if they matter outside America, they should be mattered in the Middle East as well. That's why the president of the superpower should be responsible in making the statements that if I'm gonna come, I'll burn the Middle East. Is that a professional statement that a leader should give? That if I'm gonna be the president, I will burn the whole Middle East. Is it that easy to just go and order your military to overtake? Despite knowing that, despite having the control of half of the Middle East in the form of Israeli occupation, and at the same time having the control of Middle East while having their forces in Iraq, and now even they got the Golan Heights, right? And at the same time, still he's not happy with that and is saying that he's gonna burn the Middle East. And now, when the fight has started in Los Angeles, what can he do? I think Donald Trump should go and throw the water at the fire who's in Los Angeles. That's the only thing he can do now. A fire in Los Angeles. And he can't do anything about it. Despite having all the resources to stop that. Now let's suppose if Donald Trump puts Middle East at fire, there is no snowfall. There is not enough rains in the Middle East. So what he's planning? Actually, he is planning to kill billion peoples of the world who are living in one of the most vital parts, at the most vital points. So that means lives other than American people who are living in the world doesn't matter to them. Yeah, exactly. And that's another stage of racism. You can call it a continental racism, that it gives a statement that it's gonna burn the Middle East if Hamas doesn't leave the hostages. And let me tell you one more thing. He is not the president of America yet. He's now taken the official oath. He has not taken the official oath to become the president of America. What is he going to do if he becomes a president? It's going to be more lethal for sure. Another very inhumane and unprofessional statement by Donald Trump is that if Canada becomes the part of the United States of America, they're gonna be given more freedom
more rights, more wages, more money. Now, a country with a history of over 100,000 years, and his neighbor's president, who has now become the official president yet, gives a statement that if he becomes a president, he's offering the neighbored country to become the part of their own land, so that they're gonna be giving more wages. What is he doing now? He's planning, actually, is planning to end their own recognition of Canadians. Like he's saying that if Canada becomes a part of USA, they're gonna be given more wages. That sort of means that he's ending the recognition of Canadians, their passports, their own land is gonna be considered as the land of Americans. And I'm sure they're gonna be under the racism for sure. So these are a few irresponsible statements, irresponsible behaviors from the leaders of the world that are continuously hurting the humanity. And it's not stopping. Still, they are giving statements. They are ready to rule. They are ready to ruin. हेलो भाई, क्या चल रहा है स्ट्रीम पे? दोस्त ऐसे बस वो थोड़ा सा लगा हुआ था मैं शांतानु. And I actually thought you were India, so I asked questions in Hindi. Yeah, I can speak Hindi as well. So to all the people in the stream or watching the channel, subscribe the channel and press the bell icon. So whenever I'm gonna come live again, you will catch me up here. These blunt statements actually makes a person to think about where this world is going. Like, despite knowing this, there is a climate change, despite knowing that 2 billion people of the world sleep without eating a food. Like 2 billion people of the 2 billion people of the world sleep without taking their meal. They are that much hungry. And at the same time, the leaders of the world are thinking to burn, to attack, and to ruin an entire region, despite knowing that there is poverty. Instead of working on for the well-being of people, to make them earn, to make them able to eat. And at the same time, leaders of the world are giving the statements that they're gonna burn the Middle East, they're gonna burn the Africa. This clearly shows their intentions and clearly indicates that the power is in the wrong hands. Power to lead the world is definitely in the wrong hands, and you guys gonna see more consequences of that when Jonathan Trump is gonna become the president of America. You guys gonna see the side effects of that. You're gonna see the consequences of that. Where you're from? Shantanu, I'm from Lahore. मुस्कान साफ करो. पंखा आप साफ कर दो मुस्कान, मैं नहीं कर सकता. मेरा कद छोटा है, मैं पहुंच नहीं पाता हूं वहां तक. So, the power being in the wrong hands results in only demolition, results in destruction. So, yeah, thank you for that. Consequences of the statements by the irresponsible leaders always results in that.
climate change, world problems, poverty, and there is the statements that they're not gonna end the poverty of the world. They're not gonna end the continuous genocides that are being started all around the world, and they only give the statements to promote it more. Like there is a war going on between the two countries, and the third country comes only to sell the weapons. War is going on between two countries, and the third country comes to sell the weapons to both the countries just to earn few bucks. What about the human lives? Human lives and the innocent people who are under the verge of elimination. Whole families are being vanished. War going on between two countries, and the third country comes and sell the weapons instead of providing food, instead of stopping the both of the countries to the table talk, stopping because a leader who has given the statement that we are starting a war. Now the war is started. Where is the leader? Leader has just flown away to another country and living his peaceful life in the villas that he bought through corrupt money, through his blank checks. And the innocent people who can't leave that particular country from both sides, they're gonna suffer. Only reach one time. I mean, this is such a huge estimate that 2 billion people of the world only eat one time, and the second time they don't have money to eat, do not have resources to eat, and sleep. Seriously, it's a high time to think and go in the positive direction. So these are the intentions of actually the world leaders that when when the war starts, they start selling the weapons and they call it a marketing strategy. I think the better strategy should be to provide food to the innocent people, stop the world from being arrogant against each other, spread peace, spread love. To all of you guys in the stream, don't forget to like and subscribe the channel. So whenever I'll come strive. Whenever I'm gonna come live again, you guys will catch me up here. Don't forget to like and subscribe the channel. And I hope you guys have been doing great. It's really surprising that how countries tend to be sympathetic and arrogant at the same time. Just look. Here, a war starts, and a country starts selling the weapons to one of the countries to go for the full-fledged fight and the demolition of the people from both sides, demolition of the development and infrastructure. And at the same time, from another point of view, that country who's selling the weapon, they start giving the aids to the people who've been the victims of the war. Isn't it surprising?
from one side, they're providing the weapons for the fight, and from the other side, they're providing the aid to the victims of the war. This is literally the huge hypocrisy from the people. वालेकुम अस्सलाम. भाई पहले गालियां दे रहे थे, अब कह रहे हो खुदा हाफिज. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर जी. Thanks for the stream, sir. You guys, all of you watching the stream, don't forget to like and subscribe the channel, and press the bell icon so you guys gonna get the notification whenever I'm gonna come live again. So अबे क्यों बंद करूं स्ट्रीम? तुझे बिल आ रहा है इसका? तो है कौन, मुझे बता ना जरा. मैं भी पाकिस्तान से हूं, तो अपनी जगह बता, मैं आता हूं तेरे पास. जब से स्ट्रीम शुरू हुई है तो कमेंट करे जा रहा है. I'm just becoming respectful to you, bro. I'm behaving very respectful. I'm behaving very respectfully to you, bro. I'm just being more respectful to you. कौन से सिटी से हो? रॉक रोल? To all the people out there, don't forget to like and subscribe to the channel, and like the stream as well. I'm from Islamabad. इस्लामाबाद में कौन सी जगह से है, बता ना जरा. तामन को तो इतनी प्यारी जगह पे रह रहा, जाके एंजॉय कर. तुझे क्या जरूरत है किसी से टांग अड़ाने की? कोई काम कर, धंधा कर. स्ट्रीम में आके लोगों को तंग कर रहा है. तेरी वजह से सारा मैं भूल गया हूँ अपना रिदम ही. अबे पहले लिखना तो सीख ले. टेक्स्ट तेरे से सही से लिखा नहीं जा रहा. एज कितनी है तेरी? So
Los Angeles is under fire from the previous 4 to 5 days, and $1 billion properties have been demolished because of that great fire. I hope that people have survived their lives because they can make properties again, but the one who is dead is not gonna come back. So hope for the well-being of the people. यही मंगा न बाबा न दरवंगा. और कोई भी ना आया और कोई नहीं आया की लैके आया यार पठान आया बैठा ही जब लाइव चार्ज यार कसम भूख बड़ी लगी है महंगा कोई शल है खान भी ना सही यार YouTube से हाँ फोन तो खत्म करने लगा काफी देर से होंदा की पे लाइव तो सामने लगा फालतू की वीडियोस बना रहा है तुझे रिपोर्ट करके बैन कराऊंगा. अबे कोई काम धंधा ढूंढ ठीक है ना कोई अपने काम से काम रख वही ना तेरी ईगो स्पोर्ट होगी बैन करवाने से और क्या होगा. बेटा तू जोर लगा ले जितना लगा सकता है कर सकता है तो कर. हाँ देख आया तू एडा चल निकल साया तू मैनू अपना एड्रेस दे पहले मैं तेनू बैन कराना. On the way to you courier. Okay. देख दूर है इंटरव्यू क्या हो गया या कथी हैं सही है गल बन दस कोई जो टांग गया ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ कि कॉल सेंटर आ की है कॉल सेंटर वाले भी पैसे नखरे करने लगते ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਾयूस कुन माहौल ਸੀ वो कॉल सेंटर है सारा वो ਹੁੰਦਾ है दूसरा ब्लैक मनी वगैरह का ना ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ओ चंगा किते नहीं गया उधर तो तू पहले ही पूछ ले मैं तो नहीं रहना ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ चलो जी पहले 15-20 घंटे बैठे रहना एक भी नहीं रह गया पहले 15-20 घंटे बैठे रहना एक भी नहीं रह गया हो की रे बंदा बोल के थक जाता है वैसे थोड़ा देर गप गुप की थी चैनल है तेरा हाँ कदा YouTube हाँ मैं चेक कर Authentic Randomisation मैं बैठा है मतलब रुक जा चुप और उत्तर तू एड्रेस दे ना अपना दसन किथे लगा है योर कोरियर इज ऑन द वे कल मैच खेड बैठा हूं तो लत्तां दी पीड़ ही नहीं पई जांदी
ਕਾਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੰਦਾ, ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਮਾਮੂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਚੇਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ। ढीला भी चढ़िया ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਐम्बैरेसमेंट फील ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਗੱਲ यार मैं सब्सक्राइब ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਲ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ जब ब्रेकअप होने वाला ना मैं तो वीडियो बनाई आती है। सिग्मा बॉयज अस्सलाम वालेकुम। सिग्मा बॉयज तुम है? वालेकुम अस्सलाम दोस्त, कैसे हो? मैं बड़ी गंदियां वीडियो बनाई है जो मैं पहले आया लाहौर पहले दिन गलबन 2-3 दिन बाद ते मेरा एक दोस्त था शिराज को करो दिन मैं 50 लाया ये 3-14 दिन ना मेरा पहले सेमेस्टर हॉस्टल उसने 50 ला के वीडियो पाई है 3-4 साल उस तो बाद 2 साल तक मैं वीडियो ही नहीं पाई। सही चैनल है। What happened, man? Actually, here is a guy who started abusing me, and he was continuously manipulating the things, so I just stopped it. Shantanu, where are you from, bro? अपने बड़े बंदे की इंटेंशन होती है ना, मेरी इंटेंशन अच्छा लगता है स्ट्रीम करके। आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। वेलकम टू पाकिस्तान डिजिटली। I am from Mumbai Maharashtra. Okay, are you the supervisor of Ratan Tata? Ratan Tata the supervisor हो तो नाम शंतानु। Is it your real name, Shantanu? Shantanu. Okay, so it's not your real name. Bro, have you subscribed the channel? Hey, Sigma Boys, walaikum assalam. And to all the viewers who are watching the stream, don't forget to like and subscribe the channel. Get comment आया आपका पंखा बहुत गंदा है। मैं कहा आज सफाई कर तो मैं दिन खाना एक मिनट फैन कितना गंदा है।
साफ करो। मैं क्या आज भाई No, it's my real name. Yeah, I can speak English, bro. Sigma boys, where are you from? शंतानु यार इकट्ठे रहते थे, आई थिंक वो बाकी यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, और मैं यहाँ से ना मूव कर गया था एक और जगह पे। पहले मैं इधर रहता था, फिर यहाँ से मूव करके एक और जगह चला गया। तो अभी काफ़ी 1-2 महीने के बाद वापस आया हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का पूछा है कि काफ़ी देर बाद आया। मैं पहले भी लाइव आता रहता हूँ, लेकिन डिफरेंट जगह पे आता हूँ, इसलिए लोगों को लगा कि बाकी मैंने स्ट्रीमिंग छोड़ दी है। वो मैं इनसे मिलने आया था तो रात इधर रुक गया, तो आज मैंने कहा काफ़ी दिन बाद आज जो है इधर मौका मिला तो स्ट्रीम करता हूँ, वो इसीलिए आज स्ट्रीम किया। एंड आई रियली एंजॉयड इट ऑनेस्टली। कुछ लोग होते हैं यार, बीच में स्ट्रीम में क्या हुआ था, लोग गालियां देने लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने स्ट्रीम करना छोड़ दिया। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इस जगह के साथ काफ़ी यादें जुड़ी है। लाइक इधर मैं तकरीबन 2 साल रहा हूँ, और किसी वजह से मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ा, मूव करना पड़ा, फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब भी इनसे मिलने आता रहता हूँ। अब तो पहली बार मिलने आया हूँ काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिया फील हुआ कि एक जगह पे इतना वक्त गुजारा है मैंने। दोस्तों यूट्यूब के फ्यूचर प्लान्स शंतानु यार, लाइक बचपन से ना, लाइक जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैंने कभी भी यूट्यूब को सीरियस नहीं लिया, ऑनेस्टली बताऊं तो। आई डोंट नो कि यूट्यूब का फ्यूचर मेरा क्या होगा, कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने इसको कभी सीरियस नहीं लिया। बस ये है कि कभी वीडियोस बनाने लग जाता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, कभी शॉर्ट्स डालने लग जाता हूँ, कभी लाइव स्ट्रीम करने लग जाता हूँ, और अगर ना काम करूँ तो 2-2 महीने तक कोई वीडियो नहीं डालता। अब ये हिसाब लगाओ कि जब मैंने पहला यूट्यूब पे वीडियो डाला था 2021 में, उसके बाद 3 साल तक वीडियो ही नहीं डाला, 2024 में काम करना शुरू किया। मतलब 3 साल के गैप के बाद मैंने वीडियोस डालने शुरू किए थे। तो बस ये है कि कभी कभी काम कर लेते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं। इसे अपने पैशन के लिए, मनोरंजन के लिए करता हूँ। लाइक एक वो कहते हैं ना कि काम करके आपको अच्छा लगता है करना, वो मुझे ये करके अच्छा लगता है, वो इसलिए करता हूँ। फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं है, बस बैठ जाता हूँ, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। डू यू लाइक फुटबॉल? या ब्रो, आई लव फुटबॉल, सिग्मा बॉयज। बट ये है कि यूट्यूब पे एक चीज़ सीखी है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो इजी नहीं है। यूट्यूब पे ये सीखा है, स्पेशली यूट्यूब। हम अपनी एफर्ट से उस चीज़ को इजी बनाते हैं। लाइक अब मैंने 3 साल पहले शुरू किया, मेरे बाद कितने यूट्यूबर्स आए होंगे जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स गए होंगे, मिलियंस में गए होंगे, लेकिन मेरे नहीं गए, बिकॉज आई डिडंट टुक इट सीरियस। इज थ्रू योर हार्ड वर्क। जब एक बार ऑडियंस फ्लो करना शुरू कर दे, लाइक आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक चले जाओ, 50,000 तक चले जाओ, उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाता है काम। तो वो चीज़ है, कभी सीरियस लिया नहीं है यार इस चीज़ को, और आगे कोई इतने खास प्लान्स भी नहीं है सीरियस करने के इसको। ओह नाइस, नाइस ब्रो। किस तरह का कंटेंट राइट करते हो आप, और यूट्यूब ऑटोमेशन कर लेते हो शंतानु? शांतनु, इफ आई कांट प्रोनाउंस योर नेम राइट। यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में मुझे एक लड़की मिली थी करीबन काफ़ी अर्सा पहले, उसने मुझे बताया था कि वो मेरे चैनल की ना ऑटोमेशन करेगी। उससे ये होगा कि मेरी वीडियोस और स्ट्रीम्स वगैरह जो है ना वो फॉर यू पे आने लग जाएंगी, और वायरल हो जाएंगी, और व्यूज़ आएंगे, और ये वो।
तो उसने मुझे काफ़ी प्रूफ दिखाया कि ये देखो मैंने इतने लोगों का मोनेटाइज करवाया है, इतने लोगों को मैंने ये किया है, या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। एंड उससे ये हुआ कि मैं कन्विंस भी हो गया था ऑटोमेशन करवाने के लिए, लेकिन फिर मैंने ऑटोमेशन करवाई नहीं है। बस लाइक मैं कह रहा था कि एक चीज़ है जिसकी मुझे इतनी जल्दी पड़ी नहीं है, इतनी आग नहीं लगी हुई कि मैं ये सब करवाऊँ। अगर जो कुछ भी होना हुआ, कुछ भी अगर पॉजिटिव आना हुआ तो वो खुद ही आ जाएगा। आई डोंट हैव टू रियली रश फॉर दैट। इजीली बस लगे रहो, चुप करके अपना काम करते रहो। बस इसीलिए फिर मैंने उसे करवाया नहीं, क्योंकि मुझे एक दोस्त ने बताया था कि अगर आप ऑटोमेशन या पेड वॉच टाइम लेते हो तो उससे ये होगा कि आपका चैनल जो है ना डेड हो जाएगा, क्योंकि वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं होते, और जो आपके वो जो वॉच टाइम होता है वो भी ओरिजिनल नहीं होता। इस चीज़ को यूट्यूब आइडेंटिफाई कर लेता है और आपका चैनल डेड हो जाता है। इसलिए फिर मैंने वो नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो? संतानो यार, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस टाइप डाली भी हुई है अपने चैनल पे, अगर आप वो देख लो तो। कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है संतानो ब्रो, अगर आप देख ले तो। वो असल में उसका कंटेंट मैं खुद ही लिखता था, और एक फीमेल से रब्ता हुआ था, उसने बोला था कि मैं आपके लिए कंटेंट लिखूंगी, लेकिन उसके बाद उसने लिखा नहीं है। और एक बार उसने लिखा था लेकिन वो मुझे सही लगा नहीं है, फिर मैं खुद ही लिखता था अपनी वीडियोस के लिए। ये इस समर में तकरीबन 3-4 महीने की पहली बात, 3-4 महीने पहले की बात है। मैं खुद स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने लग गया था, लाइक लिखता भी खुद था, वीडियो बनाता भी खुद था, वॉइस ओवर भी खुद करता था, और अपलोड भी खुद करता था। व्यूज भी आने लग गए थे, और काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी किया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई और झमेले इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बस कुछ कर नहीं पाया। यार उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है शंतानु। मैं उसमें क्या करता हूँ कि मैं बस जो मन में आता है ना, कोई भी टॉपिक आ जाता है, लाइक फिलोसफिकल ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी टाइप वीडियोस हैं जिसको मैं लिख देता हूँ। और उस वीडियो के जो मोस्ट ऑफ द सीन्स है ना, उसमें मैंने अपने दोस्तों को ऐड करके शूट किया हुआ। मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं वो वीडियोस, 5-6-7 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें ये होता है कि मैं अपने जो भी मन में आता है, इसमें जो भी मन में आता है वो लिख देता हूँ, और लिख के उसको जो है कंपोज करके थोड़ा वीडियोस बना के एडिट करके वॉइस ओवर करके लगा देता हूँ। और काफ़ी अच्छे से ये मैंने वीडियो डाली भी थी। आखिरी वीडियो तकरीबन 3 महीने पहले डाली थी मैं। व्हाट यू स्पीक इन दिस लाइफ? एक्चुअली ब्रो, I don't speak about a general or specific topic. I just speak according to the audience demand. So nothing specific. Only what public demands from me, I just goes for it. और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रीम हम कर रहे होते हैं और यूट्यूब जो है उसमें हम कुछ ऐसा वैसा बोल देते हैं कि यूट्यूब जो है वो आपकी स्ट्रीम, और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और शंतानु, अगर मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ तो मैं ज़रूर आपसे एक आधा स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा, ज़रूर। कभी अगर राब्ता हुआ आपका और मेरा तो आपसे स्क्रिप्ट तो लिखवाऊंगा। वैसे आप बता दीजिएगा कि आप स्क्रिप्ट किस तरह के लिखते हैं। बिखरने का मुझे को शौक है बड़ा। क्या होने वाला है? And thanks to all of you guys for being in the stream, and those guys who has not subscribed the channel yet,
I urge you guys to like and subscribe the channel, so whenever I'm gonna come live again, you guys will catch me here. And मैं स्क्रिप्ट लिखे है, जैसे एग्जांपल दूँ तो डॉक्यूमेंट्री मोस्टली और है, ट्रू क्राइम भी है. ओके शंतानु, गुड टू हियर दैट. और कभी इंस्टाग्राम पे वेल इट्स नॉट बैड इफ आई मेंशन माय इंस्टाग्राम हियर. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो शंतानु, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी. तो कभी मुझे स्क्रिप्ट चाहिए हुआ तो ज़रूर आपसे लिखवाऊंगा. गुड के सोशल मीडिया का कुछ तो फ़ायदा हो कि हमें टैलेंटेड लोग मिलें और उनसे इंटरेक्ट करें हम. आप वो मेरे चैनल पे वीडियो चेक कर लीजिएगा, और जो भी दोस्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आप मुझे जो है यहाँ पे रीच कर लें. इट्स गुड दैट यू गाइस आर हियर. नाइस टू सी यू. Yeah, Shantanu, thanks for coming here. Thanks to every one of you for coming here. As this stream reaches to the completion of 1 hour, I'm gonna end this in 15 seconds. So thanks for being here. Thanks for connecting with me. It's really great feeling to come on live stream and talk with you people. Thanks to all of you guys for coming here. See you. Bye bye for that. Till then.